मॉर्निंग एवरीवन, हेयर आई अनीता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यूपी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच फेज ऑफ द मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिनेप्सिस? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन एंड डिप्लोटीन। सो करेक्ट आंसर विल बी योर जाइगोटीन। In C4 plant, CO2 is first accepted by RUBP, PGA, PEP या Rubisco. Correct answer will be the PEP. Third question, bar body in mammals represent option A inactive X chromosomes, inactive Y chromosomes, nucleolus या lysosome. So correct answer will be the inactive X chromosomes. Fourth question, the enzyme responsible for unwinding DNA during replication is ligase, polymerase, helicase या primase. So correct answer will be the helicase. In lac operon, lactose act as a repressor, co-repressor, inducer या enzyme. So correct answer will be inducer. Consider the following statement about mitochondria. They are double membrane bound organelle. बिल्कुल correct है. They contain their own DNA. They are site of the photosynthesis. So they are not site of the photosynthesis. They are the site of the respiration. So correct answer will be the A, 1 and 2 only. Which statement are correct regarding DNA? DNA replication is the semi-conservative. Adenine pairs with the thymine. Uracil is present in DNA. So correct पूछा हुआ है तो correct में uracil that is not present in DNA, it is present in RNA. So option 1 and 2 will be the correct. During translation, peptide bond formation is catalyzed by DNA polymerase, peptidyl transferase, amino acyl tRNA synthetase, RNA polymerase. So correct answer will be the peptidyl transferase. Hardy-Weinberg equilibrium is disturbed by gene migration, genetic drift, mutation, random mating. Choose the correct answer. इसमें आपको genetic migration आपका Hardy-Weinberg से related है, genetic drift भी है, mutation भी है, but not the random mating. So option will be the B. 1, 2 and 3. Option will be the correct. Option B will be the your correct answer. Which of the following hormones act through intracellular receptor? Insulin, adrenaline, thyroxine या glucagon. तो thyroxine act as intracellular receptor. A typical sigmoid growth curve is represented by arithmetic, that is nt equal to k 1 plus a की power minus rt, that is arithmetic growth, geometric growth, logistic growth या exponential decay. This is the logistic growth. In the lac operon, the structural genes are IPO, ZYA, POZ, IZY. The correct answer will be the lac Z, lac Y and A. Z किससे related है? That is related to the beta galactosidase, and Y that is related to permease. Permease related है, and A related to trans acetylase. Question number 14. Photorespiration occurs because Rubisco acts as an oxygenase. ATP is absent. Chlorophyll is degraded. Stomata remains closed always. So correct answer will be your Rubisco act as oxygenase. Coming to the question number 15. Column following from column 1 to column 2. Sertoli cell, testosterone secretion. Leading cell, nourishment of the sperm. Corpus luteum, progesterone secretion. तो सर्टोली सेल जो होती हैं that is nourishment of the sperm. Leading cell, testosterone stimulation. Corpus luteum, progesterone secretion. So correct answer will be the A का 2, B का 1, C का 3. Option number A will be your correct answer. Question number 16. The relationships between the orchid growing on mango trees: parasitism, commensalism, mutualism and predation. So it's example of commensalism. According to the 10% law proposed by Raymond Linnemann, if producer contain 10,000 joule of energy, the energy available to secondary consumer will be 1000 joule, 100 J, 10 joule और 1 joule. So यहाँ पे 10% degradation log से हम check करेंगे. That is the correct answer will be that is 100 joule. Question number 18. In a stable population, the H pyramid is bell-shaped, triangular, on-shaped या inverted shape. So it is a option A, bell-shaped. The carrying capacity of an environment is represented by R, N, K या B. Carrying capacity वही logistic का formula, logistic growth का dN/dt.
that is equal to Rn K minus N upon K. तो यहाँ पे जो K है that is carrying capacity. So option C will be your correct answer. Which one is a sedimentary geochemical cycle? Carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle या phosphorus cycle? So phosphorus cycle is your biogeochemical cycle. Biomagnification refers to increase in population size, increase in nutrient content in soil, increase in concentration of toxic substance along food chain, increase biomass at each trophic level. So toxic substance का concentration increase होना food chain के साथ, that is biomagnification. The logistic population growth curve is J-shaped, S-shaped, L-shaped या bell-shaped. तो ये logistic population growth जो होती है that is S-shaped, B option. The population growth equation under exponential growth condition is logistic equation, exponential equation, Hardy-Weinberg equation या predatory prey equation. So it's a exponential equation. Cardiac output is the product of the heart rate and the blood pressure, stroke volume, pulse rate and diastole volume. So it is a product of the heart rate and the stroke volume. Next question. During the absolute refractory period of neuron, a stronger stimulus can initiate another action potential. Sodium channel remains inactivated. Potassium channel remain completely closed. Membrane is fully polarized. So यहाँ पे sodium channel जो होता है वो inactivated होता है. Question number 26. Which of the following correctly explain the chloride shift? Movement of chloride ion from RBC to plasma in lungs. Exchange of bicarbonate and chloride ion across RBC. Active transport of chloride into alveoli. Diffusion of chloride into tissue. So chloride shift में क्या होता है? Exchange of bicarbonate and chloride ions across RBC membrane. Question number 27. The maximum absorption of the glucose and amino acid in nephrons occur in DCT, collecting duct, PCT, loop of Henle. तो PCT proximal convoluted tubules में maximum absorption होता है glucose और amino acid का. Question number 28. Which of the following hormones act via CAMP यानी कि cyclic adenomonophosphate as a secondary messenger? Thyroxine, cortisol, insulin या FSH? तो FSH. Number 29. During ventricular systole, semilunar valves open, AV valves remain open, blood enters atria via ventricles, atrial pressure exceeds ventricular pressure. So यहाँ पे semilunar valves जो होती हैं वो open हो जाती हैं. Counter current mechanism in kidney primarily helps in active secretion of iron, formation of hypotonic urine, concentration of urine, filtration of protein. C option, that is concentration of the urine. During ventricular systole repeat हो गया again, तो इसका option क्या था? Semilunar valve. Question number 32. Cardiac muscle differ from skeletal muscles because cardiac muscle is multinucleated, shows voluntary control, possesses intercalated disc, lack actin and myosin. तो cardiac muscle skeletal muscle से differ है because cardiac muscles में intercalated disc present होती है. Question number 33. Which is the mainly responsible for depolarization of cardiac pacemaker cell? Calcium, sodium, potassium या chloride? So correct answer will be the option A, calcium. If renal blood flows decreases severely, secretion of which enzyme increases? Pepsin, renin, trypsin. तो renin. The Herring-Burer reflex prevents collapse of lungs over inflation of lungs, hypoxia and tissue bronchoconstrictions. So option B will your correct answer. That is the overinflation of lungs. Which of the following is not secreted by adenohypophysis? GH, ACTH, vasopressin, TSH. So vasopressin, that is secreted by the neurohypophysis, not adenohypophysis. Flame cells are concerned with osmoregulation in Annelida, platyhelminthes, nematoda, Cnidaria. So flame cells is mainly present in the platyhelminthes, option B. Which one of the following is the correctly match? Radula. Radula Echinodermata में नहीं, mollusca में present होता है. Bucklungs arthropoda सही है. Quanocytes इसमें नहीं होता. Quanocytes is present in Porifera. Nematocytes इसमें Porifera में नहीं होता है, Cnidaria में होता है. Cnidarian. So correct answer will be the Bucklungs. In cockroach, Malpighian tubules are primarily concerned with digestion, respiration, excretion या circulation.
तो मालपीथियन ट्यूब्यूल दैट इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन. Which of the following statement is incorrect regarding echinoderms? Adult show radial symmetry. करेक्ट है. ये करेक्ट है. एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री करेक्ट है. लार्वी आर बाइलेटरल सिमेट्रिकली करेक्ट है. दे पजेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. एंड वाटरवैस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, इट इज करेक्ट. मेडिपोराइट यूपीट वगैरह इसी में आ जाता है. कॉकरोच हेपेटिक सी कार प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट एंड हाइंडगट, क्रॉप एंड गिजार्ड, इलियम एंड कॉलन. तो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. Which of the following groups possesses both metameric segmentation and closed circulatory system? Arthropoda, mollusca, annelida या echinodermata. तो annelida में closed circulatory system और metameric segmentation दोनों ही present होता है. Question number 43. Which one of the following statement is correct? All coelomates are protostomes. All pseudocoelomates are diploblastic. Hemichordata were earlier included under chordates. All mollusca possess closed circulation. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी, हेमिचॉर्डेटा वर अर्लियर इंक्लूडेड अंडर कॉर्डेट्स. क्वेश्चन नंबर 44. इन अर्थवॉर्म्स कैल्सीफेरस ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद क्रॉप, स्टमक, गिजार्ड, इंटेस्टाइन. सो इट इज रिलेटेड टू द स्टमक. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? रेड्यूला मोलस्का से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है. पेडिसिलेरिया एकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड है, ये भी ठीक है. क्वानोसाइट इज रिलेटेड टू पॉरीफेरा, करेक्ट है. Complate that is not related to Nidaria, that is related to Ctenophora. So correct answer क्या हो जाएगा? Complates. In mollusca respiration occurs through gills, mantle cavity या pulmonary sacs. तो mollusca में respiration तीनों से ही होता है, गिल से भी, मेंटल से भी, पल्मोनरी सैक से भी. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन विल बी और करेक्ट. ए 1, 2 and 3. The larval form shared by Annelida and Mollusca suggesting affinity. तो यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा जो है हमारा वो एनेलिडा और मोलस्का से एफिनिटी करता है. क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? साइकॉन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज नहीं है, दिस इज अ मेराइन स्पॉन्ज. स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज है. यू स्पॉन्जिया बात स्पॉन्ज कहते हैं. हाइड्रा टीनोफोरा नहीं है. सो यहाँ पे करेक्टली मैच है आपका यू स्पॉन्जिया, दैट इज द बाथ स्पॉन्ज. क्वेश्चन नंबर 49. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिड एंड आर्थ्रोपोडा? पेरिपेटस, ब्लैनोग्लॉसस, नेरिस, लिमोलस. तो पेरिपेटस दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. लास्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा? वेंट्रल हार्ट, फेरेंजियल गिल स्लिट, डोर्सल नर्व कॉर्ड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो यहाँ पे आपका कॉर्डेटा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कॉर्डेटा में. सो आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.